Today we will start the chapter number 5, that is the states of matter, and we will discuss the liquids in it. Now, what is a liquid state? The state of matter which has definite volume but no definite shape is called as a liquid state. यानी मैटर की वो वाली हालत जिसका फिक्स वॉल्यूम तो होता है मगर उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती. आप जिस कंटेनर में इसको डालते हो इट अडॉप्ट्स द शेप ऑफ दैट कंटेनर. That state is called as a liquid state. Now, looking at the molecular structure of the solid, liquid and gases, so we can say that liquid is considered as the intermediate state between the gases and the solids, as it shows resemblance to both of these states. Looking at the diagram and at the molecular arrangement, we can see that the molecules of a solid are compactly packed to each other, while in case of gases, the molecules are far apart from each other. There are large empty spaces among them, while the molecules of the liquid just touch each other and there are few empty spaces among them. And due to these empty spaces, which are considered as negligible, the liquid molecules can slide over each other and they show the phenomena of the fluidity. So, on the basis of the arrangement of the molecules in these three states, the liquid is considered as the intermediate state. It has the resemblance with both of these states. For example, like gases, the liquids are considered as fluids. They show no resistance to the deformation and they adopt the shape of a container in which they are poured. Similarly, if you study the properties of solid near their melting points, so they show the resemblance in the arrangement of molecules with the liquid states, and they also show the resemblance in the compressibility phenomena as well. Now, moving towards the characteristics of the liquids, the first one is kinetic energy. The kinetic energy of the liquid molecules is greater than the solids and lesser than the gases at a given temperature. यानी अगर आप एक हाफ टेम्परेचर पे सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को मेजर करो, तो क्योंकि गैसेस में मॉलिक्यूल्स के बीच में लार्ज एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बड़ी हाई होती है, इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस उसमें कम होती है, तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी. अगर आप सॉलिड स्टेट को चेक कर लो तो जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर कंपैक्टली पैक्ड टू ईच अदर. द मॉलिक्यूल्स कैन नॉट लीव देयर फिक्स पोजीशन, दे कैन जस्ट वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशंस. ठीक है, सो जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होगी सॉलिड स्टेट में वो काफ़ी कम होगी. तो लिक्विड की जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होगी वो गैसेस से तो कम होगी मगर सॉलिड स्टेट से वो ज़्यादा होगी. The next property is the intermolecular forces. The intermolecular forces of the liquids are stronger than gases but weaker than in solids. Because already हम इस diagram को study कर चुके हैं. Due to the large spaces among the molecules of the gases, the intermolecular attractive forces are almost negligible. While due to the close packing of the molecule in the solid states, they are much more high. So, क्योंकि arrangement of liquids is in between the gaseous and the solid state, so the intermolecular attractive forces in the liquid state that will be greater than the gases, but it will be lesser than the solid state. The next property is the empty spaces. The molecules in the liquid states are very close to each other. Empty spaces are almost negligible, thus the liquids have a definite volume. बिल्कुल स्टार्ट में ही हम लोगों ने ये बात करती थी कि जो लिक्विड्स की जो एम्प्टी स्पेसेस होती हैं वो ना होने के बराबर होती हैं, और इसी बेस पे जो लिक्विड्स का वॉल्यूम होता है दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ फिक्स वॉल्यूम. बिकॉज गैस के मॉलिक्यूल्स को तो आप जिस कंटेनर में डालते हो इट ऑक्युपाइज द होल स्पेस, मॉलिक्यूल्स के बीच में एम्प्टी स्पेसेस आ जाती हैं तो उनका वॉल्यूम जो होता है वो लार्ज कंसिडर किया जाता है. ठीक है, और दे डोंट हैव एनी डेफिनेट वॉल्यूम. अगर छोटे कंटेनर में डालोगे तो छोटा वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगी, बड़े कंटेनर में डालोगे तो बड़ा वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगी. ठीक है, बट लिक्विड्स का जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द एम्प्टी स्पेसेस अमंग देम. The next property is the no definite shape. The molecules of the liquid are in constant motion and they can slide over each other. That is why the liquids can flow and have no definite shape. Because the molecules can slide over each other, ठीक है, so they show the phenomena of the fluidity, and because of this phenomena they don't have the definite shape.
they adopt the shape of a container in which they are poured. The next property is the diffusion. They show the phenomena of diffusion to form homogeneous mixture, but the rate of diffusion is low as compared to the gases. आप ऑलरेडी गैसेस का चैप्टर पढ़ चुके हैं और उसमें आपने डिफ्यूजन को डिस्कस भी किया होगा. दैट व्हाट इज डिफ्यूजन? The phenomena of the movement of the molecules from a region of their high concentration to a region of their low concentration to form the homogeneous mixture. This is called as a diffusion. ठीक है, क्योंकि हम स्टार्ट पे ये बात कर चुके हैं, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है तो उनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो भी ज़्यादा होगा, जबकि लिक्विड्स में द मॉलिक्यूल्स कैन मूव but their kinetic energy is low as compared to the kinetic energy of the gas molecules. That is why their rate of diffusion will be low as compared to the rate of diffusion of the gases. इसकी कॉमन एग्जांपल ये है, आप एक ग्लास ले लो, उसमें पानी ले लो और उसमें आप एक ड्रॉप इंक का डाल दो और कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि जो इंक का एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बन चुका है. तो ये जो आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर अपीयर हुआ है इंक का, उसकी रीज़न क्या है? बिकॉज इंक के जो पार्टिकल्स हैं दैट मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर हाई कंसनट्रेशन टू अ रीजन ऑफ देयर लो कंसनट्रेशन एंड दे फॉर्म द होमोजीनियस मिक्सचर. ठीक है. द नेक्स्ट फिनोमेना इज़ द एक्सपेंशन. The liquids have the ability to expand at all the temperatures. Like gases, because they can move, the molecules possesses the kinetic energy. When the temperature rises, their volume will also goes on increasing. So similarly, the liquids have the ability to expand. They also show the phenomena of the viscosity and the surface tension. Viscosity and surface tension, these are the phenomena that are very important in the liquid state. ठीक है. Viscosity is the resistance to the flow and surface tension depend upon the strength of the intermolecular attractive forces. Greater will be the intermolecular attractive forces, greater will be the surface tension of that liquid. ठीक है. So the liquid exhibit both of these phenomena. Now moving towards the next topic, that is the intermolecular forces, which is defined as the attractive forces which are present among the molecules of a substance are called as a intermolecular forces. यानी वो force of attraction जो molecules के बीच में पाई जाएगी उसको हम क्या नाम देंगे? उसको हम intermolecular force का नाम देंगे. For example, यहाँ पे मैंने एक general molecule लिखा है in the form of AB. That is one molecule. This is another molecule and this is the another molecule. ठीक है. ये जो dotted line आपको नज़र आ रही है, it represents the force of attraction between this molecule and this molecule. Similarly, these dotted lines will represent the force of attraction between this molecule and this molecule. So this will be called as a intermolecular attractive force. जबकि solid lines जो आपको नज़र आ रही हैं molecule के अंदर, that will be called as a intramolecular attractive force. That force of attraction that is present within the molecule itself, that is called as an intramolecular attractive force. अगर आप कंपैरिजन कर लो इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स का एंड इंटरमोलिक्यूलर फोर्स का, सो यू विल कम टू नो दैट द इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस आर कंसिडर्ड एज वीक फोर्सेस एज कंपेयर टू द इंट्रामोलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स. और ये बात हमें कहाँ से पता चलती है? अगर हम जो है थोड़े सा स्टडी कर लें एक एग्जांपल से. जैसे कि अगर आपके पास 1 मोल वाटर सैंपल हो एंड यू आर सपोज टू कन्वर्ट दैट 1 मोल ऑफ वाटर सैंपल फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट इनटू इट्स गैसियस स्टेट, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा ताकि वो अपनी लिक्विड स्टेट से कन्वर्ट हो जाएं गैसियस स्टेट में. ठीक है. उसके लिए आपको कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी? दैट इज़ द 40.7 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पज़. नाउ अगर आप 1 मोल वाटर सैंपल को ले लो इन द गैसियस स्टेट एंड यू आर सपोज टू कन्वर्ट दिस 1 मोल ऑफ गैसियस वाटर सैंपल इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट गैसेस, क्योंकि वाटर किससे मिलके बना हुआ है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से. तो अगर आप 1 मोल वाटर को कन्वर्ट करो इनटू द गैसियस हाइड्रोजन एंड द गैसियस ऑक्सीजन, तो आपको कितनी एनर्जी चाहिए होगी? 930 किलो जूल पर मोल की एनर्जी चाहिए होगी. अब इस केस में क्योंकि आप वाटर मॉलिक्यूल के अंदर की अट्रैक्टिव फोर्स को ब्रेक डाउन करोगे, मींस इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स को आपने ब्रेक डाउन करना है टू कन्वर्ट देम इनटू द गैसियस हाइड्रोजन एंड द गैसियस ऑक्सीजन, तो आपको 930 किलो जूल की एनर्जी चाहिए होगी. लुकिंग एट द वैल्यूज वी कैन ईजिली प्रिडिक्ट दैट द
intramolecular attractive force is much more stronger as compared to the intermolecular attractive force. ठीक है, इस एग्जाम्पल से ये हमें बहुत इजीली क्लियर हो जाता है कि जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स है वो काफ़ी वीक है एज कंपेयर टू द इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स. Now the types of the intermolecular attractive forces are dipole-dipole interaction, hydrogen bonding and London dispersion force. ठीक है, intermolecular attractive force में हमारे पास ये तीनों forces आ जाती हैं, dipole-dipole interaction, hydrogen bonding and London dispersion force. Collectively these three forces will be called as the van der Waal forces in the honor of the Dutch physicist Johannes van der Waal. ठीक है, उनके ऑनर में हम इन तीनों फोर्सेस को van der Waal forces का नाम देते हैं. Now, what is the significance of the intermolecular forces? So the significance is that the intermolecular forces affects the physical properties of the compounds, like their melting points, their boiling points, their heat of vaporization, their heat of sublimation. ठीक है, physical properties किसी भी compound की वो किस बात पे depend करेंगी? वो इस बात पे depend करेंगी कि उनके अंदर कितनी intermolecular attractive forces present हैं. Greater will be the intermolecular attractive forces, greater will be their melting point, greater will be their boiling point and etc. अगर आप स्ट्रेंथ की बात करते हो कि हमारे पास जो तीनों फोर्सेस हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड लंडन डिस्पर्जन फोर्स, कि इनमें किसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है और किसकी स्ट्रेंथ सबसे कम है. सो द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस फॉलो द फॉलोइंग ऑर्डर. हाइड्रोजन बॉन्डिंग has more strength as compared to the dipole-dipole interaction, while the dipole-dipole interaction has more strength as compared to the London dispersion force. तो इसका ये मतलब हुआ कि इन तीनों में से hydrogen bonding will be considered as the strongest force and the London dispersion force will be considered as the weakest intermolecular force that is present among the molecules. In the next coming videos, we will study these forces in details, and our next video will be related to the dipole-dipole interactions. Thank you.